बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अन शौबान अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम क़ाला जअलल्लाहुल हसनता बिअशरिन फशहरुन बिअशरति अशहुरिन व सित्ततु अय्यामिन बअदल फित्री तमामुस सनति व फी रिवायतिन व सियामु शहरी रमदाना बिअशरति अशहुरिन वसियामु सित्तति अय्यामिन बिशहरैन फज़ालिका सियामु सनतिन फज़ालिका सियामु सनतिन रवाहुन नसाई वल लफ्ज़ु लहू व इब्न माजा व इब्न खुज़ैमा। सामीन मोहतरम, माह रमज़ान का महीना गुजर चुका, अब शवाल का महीना शुरू हो चुका है। हजरत शौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने हर नेकी का अजर 10 गुना रखा है। अल्लाह पाक एक नेकी का अजर 10 गुना करके देते हैं। और फरमाया माह रमजान का पूरा महीना साल के 10 महीनों के बराबर है। और शवाल के 6 रोजे, शवाल के महीने के और माह रमजान के बाद और ईद उल फितर के बाद अगले दिन फरमाया शवाल के 6 रोजे ये और माह रमजान का एक महीना, माह रमजान का एक महीना वो 10 महीनों के बराबर है। और इस तरह शवाल के 6 रोजे ये जब साथ मिलेंगे तो पूरे साल के रोजों का सवाब मिल जाएगा। एक रिवायत में है कि माह रमजान के जो रोजे हैं ये बिअशराती अशहुरिन, ये 10 महीनों के बराबर इनका अजर और सवाब है। और इसी तरह जिसने शवाल के 6 रोजे रखे वो 2 महीनों के बराबर है, तो 10 और 2 12 महीने बन जाते हैं, पूरा साल हो जाता है। आका फरमा रहे हैं कि जिसने माह रमजान का पूरा महीना रोजे रखा उसे 10 महीनों के बराबर उसका अजर है। और जिसने शवाल के 6 रोजे रखे उसका 2 महीनों के बराबर अजर है। तो इसका मतलब जिसने माह रमजान और शवाल के साथ 6 रोजे रखे उसे पूरे साल रोजे रखने के बराबर अजर अता कर दिया जाएगा। तो गोया पता चला कि 3 रोजे एक महीने के बराबर अजर देते हैं, फिर 3 रोजे एक महीने के बराबर अजर देते हैं, और 30 रोजे ये 10 महीनों के बराबर अजर अता करते हैं। और शवाल के 6 रोजे ये 2 महीनों के बराबर अजर अता करते हैं। और जिस शख्स ने शवाल के 6 रोजे और माह रमजान का पूरा महीना, माह रमजान के रोजे मुकम्मल कर दिए, यानी माह रमजान के सयाम और शवाल के 6 सयाम, जिसने ये रोजे मुकम्मल कर दिए, फरमाया उसने सारी जिंदगी रोजे रखे, उसने पूरा जमाना रोजे रखे और उसे 12 महीनों के बराबर अजर अता कर दिया जाएगा। वो पूरा साल रोजे में रहा और एक रिवायत में कि वो सारी जिंदगी रोजे में रहा। जिसने अपनी पूरी जिंदगी में
जब भी रमज़ान आए तो रमज़ान के रोज़े भी रखे और साथ शवाल के 6 रोज़े भी रखे। इस हदीस को इमाम नसाई ने, इमाम इब्ने माजा ने, इमाम इब्ने हुज़ैमा ने रिवायत किया और ये अल्फाज इमाम निसाई के हैं। According to Hazrat Shawwal, may Allah be pleased with him, narrates that the Holy Prophet, peace be upon him, says, Allah dignified Almighty makes virtue, goodness, betterment 10 times in reward, in retaliation. In other words, Allah dignified Almighty Allah dignified Almighty gives the reward of virtue 10 times in retaliation, in return 10 times. So this is the bounty of Allah, this is the grace of Allah, this is the bonality of Allah dignified Almighty, this is the benevolence of Allah dignified Almighty. And the month of Ramzan is equal to other 10 months. It means any person who keeps the whole month of Ramzan, who keeps the fastings of the month of Ramzan, so the reward and retaliation and prices of that person will be given to the reward of 10 other months of the year. So the month of Ramazan's retaliation, recompense is equal to the reward of other 10 months of the year. And any Muslim who keeps 6 fastings of Shawwal after rejoicing day, after Eid al-Fitr, so that person will achieve the reward of 2 other months. So the 6 fasting of Shawwal's prices, rewards, awards is equal to the reward of 2 other months. So any Muslim who keeps the fastings of the month of Ramzan and after Eid al-Fitr, that person keeps 6 fasting of Shawwal, so that person definitely, undoubtedly, that person will be given to the reward, and retaliation of the whole year. So the month of Ramzan and the 6 fasting of Shawwal are equal to the reward of 12 months of the year. So we should perform the 6 fastings of Shawwal. The 6 fastings of Shawwal have blessings, have mercies, have lights and brights.
The fasting purifies your thought, your speaking, your dealings, your sitting, your standing, your conception, your inner parts of your body, your mind, your brain. So the fasting gives you energy, power, ability and capability to perform lofty actions and miraculous deeds in the life. So any person who keeps the fastings, so the heart of that person, the mind of that person, the brain of that person, the inner parts of that person will be neat, clean and transparent. The thought of that person, the concept of that person, the knowledge of that person, the information of that person, the talking of that person, the speaking of that person, the dealings of that person will be neat, clean and transparent, holy, sacred and consecrated. So the fasting recovers us. The fasting recovers the whole body. The fasting removes, ends all kinds of diseases. The fasting ends sins, crimes, mistakes, errors, mischiefs, malpractices, malcustoms. So the fasting is the greatest blessing of Allah dignified Almighty. The fasting is the greatest mercy of Allah dignified Almighty. The fasting is the greatest benevolence of Allah dignified Almighty. The fasting is the greatest bonality of Allah dignified Almighty. The fasting is the greatest virtue given by Allah dignified Almighty. The fasting is the greatest action of worship of Allah dignified Almighty. The fasting gives a lot of rewards on the day of judgment. The fasting purifies outer parts of your body and inner parts of your body. The fasting purifies, purgates the whole body. The fasting purgates all matters and affairs, our dealings with other people in beauty, in honesty, in sympathy, in neutrality and cleanality, in purity, in purification. So we should perform a lot of fasting if we want to become successful in this world and hereafter this world. The saints of Allah had been kept a lot of fasting, devotional fasting, dedicational fasting, favorable fasting, commendable fasting in their life to get closeness, the approximity, the nearness of Allah dignified Almighty. The saints, a lot of saints of Allah dignified Almighty had been kept
a lot of fasting in their life to purify their thought, their mystification, their matters and affairs, to be close to Allah dignified Almighty in this life. So the fasting is the name of patience. The fasting is the name of tolerance. The fasting is the name of pureness. The fasting is the name of purification. The fasting is the name of purity. The fasting is the name of cleanliness of heart. The fasting is the name of neutrality of soul. The fasting is the name of sanctity of thought. The fasting is the name of mercy. The fasting is the name of grace. The fasting is the name of punality. The fasting is the name of sympathy. The fasting is the name of love of Allah dignified Almighty. The fasting is the name of heartly attachment with the Holy Prophet, peace be upon him. So we should keep a lot of fasting in our life to get the happiness of Allah and the Holy Prophet, peace be upon him. May Allah bless you. May Allah give you tawfiq to keep a lot of fasting and to keep 6 fastings of Shawwal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.